of the Students Development Activities and Corporate Connect, IMDR continuously organizes webinars by various renowned industry experts. Today, amongst us, we have Mr. Bishwanath Mohapatra as our guest of the day. Having an experienced alumni who holds a fascinating track record in his area of expertise enriches the value to the academic programs of an institution. They are indeed the role models for the juniors. Today, I feel privileged to get this opportunity to introduce Mr. Bishwanath Mohapatra, who is also an alumnus of IMDR belonging to the batch of 2005-2007, specializing in marketing and human resources. Speaking about him, he has a rich experience in the banking domain. He has worked in many reputed companies such as Kotak Mahindra Bank, ING Vyasa Bank, HDFC Bank. He started his career as a sales manager with Kotak Mahindra Bank and later fulfilled responsibilities as a branch manager of the HDFC Bank. Later on, he joined ING Vyasa Bank and is currently the state head and regional manager of Ujjivan Small Finance Bank. He has an expertise in team handling across various roles he had taken up during his corporate career. He has shown illustrious career progression. Apart from this, he is also a fight-rated chess player and has represented Odisha at national level chess events during his heydays. Additionally, he takes a lot of interest in the stock market and has immense knowledge about mutual fund investments. On a final note, sir, we are very grateful for your presence amongst us today. Without any further delay, I would request you to take over and share your valuable inputs with us, sir. Over to you. Thank you, Amlanji. Girivala ma'am, Shruti ma'am, my dear students, other faculty members who are present there. It is actually a privilege on my part when I got to know that I will be also part and I can contribute to some way in my capacity to the institution which gave me my first job. It was indeed a great feeling. That's why I am still packed with energy, as I said, after a 12-hour long travel schedule. Amlan ji has actually introduced me with a little bit more things. I am not an expert at mutual fund. No one is actually. We all take some decisions and we try to prove them correct. And those mistakes probably take us through. So friends, since Amlanji has already introduced me, I will not take much more time in repeating the same thing. I would like to tell you all the session will be basically divided into two parts. First part will talk about the basics of financial planning. There are certain things that would be common, that would be known to all. It might be a repetition for people who have some experience, who have already done some planning, and it will be probably new and a new learning to the people who have never done it. So it will always be at the cost of repetition, like the ex-Indian captain, Mr. MS Dhoni says, when you address the key on something that is a new topic, there would be experienced player who may find it boring, but the message, the communication has to pass for all. Since if we start assuming that everybody knows this is important, it is known to everybody, तो common है, सबको पता ही होगा, तो कहीं ना कहीं important message छूट जाता है और हमारा टीम हार जाता है. तो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ बेसिक्स डिस्कशन करेंगे. मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए. I'll not read it out. I'll try to just go for the bolder points and discuss with you. Second part is how we can actually link it with our career prospects. We know because of Corona, a lot of job opportunities are at stake presently. It is not entirely a bad market, but it is not as good as it used to be a couple of years ago. So how best we can use these knowledges to upgrade ourselves in career, either in a corporate or even as a self-employed professional. There are a few of our IMDR alumni who have done tremendously well in this job. Jay Saf, my one batch junior, Tarun Surana, one batch senior, they have been doing extremely well. I watch their videos, I read their blogs, and it is actually so fascinating. And I read a lot. That is why probably I am a fan of all these people. So that would be the flow of the discussion. And in between, as ma'am has already pointed out, if there would be any question, anything that is not clear, we'll not stop for the question answer session at the end of the session. You can stop me midway, you can ask your question, and immediately we can take it up to the best of my knowledge and whatever I know. If I cannot find an answer also, I try to just do my own research, some study, and I'll try to get back to you on this. And there are ground rules always set for all kinds of training. There are 3 ground rules here. 1, participate. 2, participate. 3, participate.
If you don't participate, this will become a monotonous lecture like I do in my office meetings. I go on reading instructions and my people may start feel boring. So interactive बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा. And I also come to this meeting with a very open mindset that I have learned something, I will learn something, and I will learn something new from my own friends who are tech savvy, who know more about technology और digital payment interface के बारे में हमसे ज्यादा पता है. तो आई एम कम्प्लीटली ओपन कि मैं 5 चीजें आपको बताऊंगा, आपसे भी 5 चीजें सीखूंगा, सो दैट इस कॉल के बाद हम दोनों प्रोबेबली एक क्लच ऊपर रहेंगे अपने आप से. सो इज एवरीबडी फाइन विथ it? Can we just start with the basics of financial planning? Yes, sir, please. Sure. Financial planning is not a very complicated thing. It is just like खाना बनाते हैं घर में, कुकिंग उसी टाइप का है. जिसको आता है वो अच्छे से बनाता है, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से बनाता है. कुछ लोग कभी नहीं बनाते हैं, लेकिन खाने की जरूरत सबको है. तो हम स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हम प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, हम रिटायरमेंट के स्टेज भी हो सकते हैं. वी कैन बी एक्सपर्ट्स एट आवर ओन फील्ड. लाइक a great cricketer, Rahul Dravid ji has lost huge funds because someone mismanaged his fund. So बहुत चीजें इधर उधर हो जाता है. तो ये एक चीज है जो हम सीख जाने के बाद we can cook our own food as well as we can eat it, we can serve it to others also. So it all starts with budgeting. अभी आप लोगों में से बहुत लोग नौकरी करके आए होंगे, कुछ लोग पहली बार नौकरी करेंगे. Hindi is fine with most of the people, ma'am, or should I speak only in English? Because there might be some friends who may find it difficult, ma'am. Hindi as well as English will work. Okay, ma'am. I will do a combo as I feel comfortable. So we start with the budgeting. Budgeting means there are two things. One, what comes in and what goes out. And being finance experts, you all know, I am a marketing and HR student. I don't know much about the finance part. So आपको अपना asset और liability include करना है. अगर आपके पास एक बाइक है, वो आज के डेट पे आपका asset है. अगर आपने एजुकेशन लोन ले लिया है, तो आपका liability बन गया. उस तरह का आपने लिस्ट बना देना है. आगे जाके आपको जॉब करना है या कहीं अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसको उसका रिटर्न आ रहा होगा, वो आपका कंस्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है. जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए मेरा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, और मेरा एग्जिस्टिंग लायबिलिटी और एसेट कितना है. ये चार चीजें नहीं होने से वी ऑल गो विथ ए फैंटेसी वर्ल्ड कि भाई मेरे को ये बना देने से ये होगा, मेरे दोस्त ने बिटकॉइन में लगा के इतना कमा दिया, इसने इंट्राडे पे इतना कमा लिया. एंड सक्सेस या जो रियल ग्रोथ होता है उसको हम मिस कर लेते हैं, क्योंकि हर बॉल पे सिक्स मारने वाले आदमी को कैच आउट होने का खतरा है. इसलिए हमें पहले अपना लायबिलिटी और एसेट को लिस्ट कर देना है, और एवरी मंथ का हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो का लिस्ट बना देना है. जैसे आपका खर्चा है, आपको रेंट देना पड़ता होगा, घर के लिए किराना होगा, बाइक में पेट्रोल डालते होंगे, कार में पेट्रोल डालते होंगे, वो सब खर्चा जो आपका है उसको आपने पैरेलल रख लिया. तो आपका मोटा मोटा शेड्यूल बन गया. चलो मेरे पास X रुपया है, मेरे का Y का लोन है मेरे ऊपर, और मेरे को हर महीने A घुसता है मेरे अकाउंट में और B is going out from my account. So once this all goes on, we have to start with the first thing first, that is save something. There are some people who may start with a big salary, किसी का छोटा सैलरी हो सकता है. So you can start saving as low as 1,000 rupees, and it is all possible. कोई अब IMDR इतना तो अच्छा कॉलेज है कि सबको ज्यादा सेविंग करने का मौका मिलेगा, बट इवन इफ यू स्टार्ट विद 1,000 यू विल गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर जब हम आते हैं तो I'll just scroll down a little bit on my notes. कि कोई भी चीज करने से पहले पहला चीज हमें देखना है इमरजेंसी. जैसे आपके कुछ फैमिली रिलेटिव्स नौकरी करते होंगे, दोस्त वगैरह जो आपसे सीनियर होंगे 1-2 साल. कुछ लोगों का कोरोना के कारण नौकरी चला जाता है, कुछ लोगों के कंपनी शट डाउन हो जाते हैं, तो अभी उनके ऊपर शायद एजुकेशन लोन भी होगा, उनके ऊपर फैमिली एक्सपेंस का होगा, मेडिकल खर्चा होगा. तो वी हैव टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड एन इमरजेंसी फंड. जो पहला चीज होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो है इमरजेंसी फंड. कोई भी जगह पे हमारे पास 3 से 6 महीने का हमारा बेसिक एक्सपेंस स्टोर होना चाहिए. इतना टाइम लग जाता है एक जॉब ढूंढने में, या कभी कोई बड़ा मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए भी. तो someone who starts with a 50,000 salary, he should have a corpus of 1.5 lakh to 3 lakhs saved separately, not in the market or not in the mutual fund. ये सेविंग्स का अकाउंट में या एफडी में आप रख सकते हो, जो आपका इमरजेंसी फंड बनेगा. इसका यूज कब करना है, अगर कभी भगवान ना करे किसी का नौकरी चला गया या सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया. जब नौकरी चला गया इज वेरी फॉर सोर्स ऑफ इनकम अगर हमारा बंद हो जाता है, देन हमें वो इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ता है. या रीजन अनप्लान, आपने मेडिकल एक्सपेंस बड़ा हो गया या कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया जो आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, फॉर दैट द इमरजेंसी फंड हैज टू बी देयर.
विदाउट इमरजेंसी फंड एनी काइंड ऑफ प्लानिंग इज रॉन्ग. अगर मेरा पहला पे चेक मैं कहीं और डाल देता हूँ टू गेट बेटर रिटर्न, आई मे लूज द मनी देयर, और मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं रहने से मेरे पास बैकअप नहीं रहे. सो फर्स्ट थिंग इज द इमरजेंसी फंड. सेकेंड में एक और चीज आता है, वो हम इंश्योरेंस बोलते हैं. अब इंश्योरेंस बोलने से सबके दिमाग में पहले आता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. LIC के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान है. आई ऑल्सो सेल इंश्योरेंस इन माई जॉब, सो आई कैनॉट कमेंट ऑन कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है. बट अब अगर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो बेसिक इंश्योरेंस की बात करें तो दो चीजों की जरूरत सबको रहता है. एक होता है टर्म प्लान, जिसमें माई लाइफ इज सिक्योर्ड अप टू ए लिमिट. इफ आई डाई, माई फैमिली विल गेट द नोमिनी, जिसको मैं बोलूंगा, दे विल गेट गुड पर्पस ऑफ मनी. A typical 1 crore kind of coverage comes at around 10,000 rupees for 30-year-old guy. आप लोग उम्र में छोटे होंगे, आपके लिए 7,000-8,000 रुपये में 1 करोड़ से ज्यादा का कवरेज आ जाए. उसमें क्या होता है, वी डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न. तो बहुत लोगों को अजीब लगता है, मैं दे रहा हूँ, मेरे को दूसरा मेरे रिटर्न देगा, रिटर्न क्यों नहीं देता. बट व्हेन वी चेज रिटर्न्स इन दिस प्रोडक्ट्स, आवर प्रीमियम गोज अप so high. I will pay 20,000, I'll get something in return. Against that, I have the opportunity to pay 7,000 and get the same amount of risk coverage. ये मैं रिस्क कवरेज के लिए दे रहा हूँ. आई एम नॉट पेइंग इट फॉर रिटर्न. रिटर्न के लिए अलग चीज है, जो हमें ज्यादा दे सकता है उसके लिए हम आएंगे. इंश्योरेंस इज नॉट फॉर रिटर्न, इंश्योरेंस इज जस्ट फॉर प्रोटेक्शन. तो टर्म प्लान बोलते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कवर हम लेते हैं. आइडियली ये कितना होना चाहिए, आपका 20 टाइम्स मंथली सैलरी होना चाहिए. या तो कुछ लोग राउंड फिगर में 1 करोड़ पसंद करते हैं, बट आगे जाके 1 करोड़ सफिशियंट नहीं होगा. जो महंगाई था पहले, जो महंगाई अभी है, उसमें बहुत सारा अंतर है. इसलिए वी शुड हैव आवरसेल्व्स एडिक्वेटली कवर्ड. कभी मैं ऐसा चाहूंगा, आई हैव अ किड ऑफ 3 years एंड माय वाइफ इज देयर हु इज नॉट वर्किंग. तो अभी अगर मैं जॉब करने जा रहा हूँ, तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो समथिंग गोज रॉन्ग विथ माय लाइफ, वुड आई लाइक देयर लाइफ टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड? आई विल नेवर वांट दैट. So for those particular purposes, I need to have a sustainable life coverage which can compensate my income. The loss of me as a person may not be irreplaceable to them, but at least the economic part will be replaced so that I can. मैंने सोचा है उसको यही स्कूल में पढ़ाना है तो वही स्कूल में पढ़ेगा. अगर वाइफ को इस तरह का लाइफ देना चाहता हूँ तो वही लाइफ चलेगा. तो ऑल दिस थिंग्स शुड कंटिन्यू. सो वी जनरली डोंट अज्यूम. एक्सीडेंट होता है तो कोई जानबूझ के थोड़ी करते हैं. वी गो ऑन आवर रोड बट समथिंग गोज रॉन्ग. लाइक दैट टर्म प्लान is going to be our accident protector. और अगर इसका यूज कभी नहीं होता, you can treat it like a डरमैट इमरजेंसी फंड. जैसे हमने इमरजेंसी फंड का बात किया, उसी तरह से हमारा एक प्रोटेक्शन है, एक मेंटल पीस है. दूसरा इंश्योरेंस जो बहुत जरूरी है वो है हेल्थ इंश्योरेंस. लास्ट 1-2 साल में तो कोविड के चलते एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. बिफोर दैट ऑल्सो we used to, being a banker, we used to sell a lot of insurance products. One of them is health insurance. मोस्ट ऑफ अस हैव ए मोबाइल, एंड व्हेन वी परचेज द मोबाइल 1-2 days के अंदर हम उस पर एक स्क्रीन गार्ड लगा देते हैं. कवर लगाए ना लगाए, क्यों लगाते हैं? कि अगर मेरे मोबाइल कुछ हो गया तो ये स्क्रीन गार्ड मेरे को बचा लगेगा. गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करेंगे, पुलिस बाबू हमारे चालान काट लेंगे. तो हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते, ये हमारे साथ कुछ नहीं होगा. बट होने के लिए किसी के साथ कुछ भी हो सकता है. दिस इज ऑल एन अनसर्टन वर्ल्ड. तो typically by paying 1,000-2,000 rupees in a year, which is probably less than 1 T per day, you can get a coverage of 5 lakhs for you as well as one or two of your family members. And that insurance can be helpful when the medical emergency arises. Otherwise, आपने तो सेविंग कर लिया, 5 लाख सेविंग कर लिया, एक मेडिकल खर्चे में 5 लाख निकल गया, तो बहुत महंगा पड़ जाता है. आजकल सारे सर्जरी महंगे हो गए और नए नए डिजीज भी निकल के आ रहे हैं. तो आइडियली आपने जॉब शुरू किया, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तो एक टर्म प्लान ले लीजिए और उसके साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए ले लीजिए. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो क्वेश्चन कि हम जब जॉब करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हमें इंश्योरेंस कवरेज दे देते हैं, तो डू वी नीड एन इंश्योरेंस ओवर एंड अबव दैट? माय आंसर टू दैट इज यस. व्हाई? बिकॉज आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का रेट बढ़ता जाएगा. अभी अगर आपने एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी चला गए और उधर इंश्योरेंस कवर बहुत ज्यादा नहीं है, या आपने सोचा कि अभी मेरे को सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, तो वही चीज महंगा रेट पे आप लोगे, उससे अच्छा सस्ते में क्यों ना उठाए वो चीज. तो इसीलिए 20s इज द बेस्ट टाइम टू बाय टर्म प्लान एज वेल एज health plan. I bought my term plan probably after getting into 30s, after getting married, and this was a sense of responsibility. But I know I was late. I have made a mistake, but people who know me, they should not make the mistake. They should learn from our mistake and should move on from that. So part 1 में हमने बोला बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग में इमरजेंसी फंड की जरूरत, और दूसरे पार्ट में हमने बोला इंश्योरेंस, जिसमें हमने 2 टिपिकल इंश्योरेंस बोले, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान. बहुत और टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, बट आज की डेट पे उसका जरूरत नहीं है. दिस इज अ वास्ट टॉपिक, उस पर हम 2-3 घंटे का लेक्चर तो नहीं लेना चाहते हैं. ये दोनों जब हो जाते हैं, तीसरे टाइप में आता है कि
आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहाँ करोगे? तो आपको अगर अच्छा रिटर्न चाहिए फ्रेंड, तो इक्विटी इज द वे टू गो। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में होता है, इक्विटी मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड में होते हैं। जिनको नॉलेज है, जो लोग टाइम निकाल के स्टडी करते हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना लाजमी है, बिकॉज आपने अपनी नॉलेज से पैसा लगाया, किसी और का सजेशन नहीं लिया, एंड इफ द कंपनी इज गुड, इफ यू अंडरस्टैंड their बिजनेस, you are indirectly becoming a partner of that company, and when that company grows, you grow with them. म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर हमारे लिए चीज मैनेज करता है, एंड द चार्ज इसकी बिटवीन 1 to 2%। वो फीस अपना ले लेते हैं और हमारे लिए अच्छी कंपनी का रिसर्च वो लोग कर लेते हैं। अगर हम अपने काम में बिजी रहते हैं, आई डोंट हैव द टाइम टू डू रिसर्च, मेरे को रात दिन देख नहीं सकता मार्केट कब बेचना है कब खरीदना है, so they will do the work for us. There is one more kind of mutual fund which is known as debt fund. अब डेफिनेशन बताने से आपको बोरिंग लगे तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अमलान जी मेरे दोस्त हैं, अमलान इज माय फ्रेंड, एंड ही नीड्स 10 lakh rupees to start a business. Now he wants Bishwanath Mohapatra, you fund me this 10,000 rupees. I can have two different kind of contracts with him. One, Amlan, what is your business size? He says 1 crore. Okay, then if I am giving you 10 lakhs, I am a 10% partner in your business. If you make a profit of 50 lakhs by the end of the year, I should get 5 lakhs. If you make a profit of 2 lakhs by the end of the year, I should get 20,000. And if you lose 50 lakhs in your business, I should also lose 50% of my investment. So my 10 lakh will also become 5 lakh. If we both are fine, we get into a deal like that. It is called partnership in business terms. So हम equity investor इधर बन गए. I am a partner of that company. If the company keeps on doing well, grows, becomes 10 times bigger, my money also grows 10 times bigger. Is there a risk? Yes, obviously. The risk is if the business does not grow, if the plans fail, then my money may be lost. It may become zero also. When we come to debt, it is like Amlan says, Bishwanath, I need 10 lakh bucks. Can you help me? I said, okay, fine. But I need 10% return on that. Would you give me? He says, I have a plan of making 50%. Well, I don't mind. You make 50%, you make a loss. I need my 10% back. So I will give you 10 lakhs. I need 11 lakhs at the end of the year. He said, yes, we go into contract. And then at the end of the year, he has made a profit of 50%. He pays me back 10%. He is happy man. He may have not made a profit. He has made a loss, but as a contract, he has to give me my money back. So is there a risk? Can anyone tell me, Amlanji, or can you pick up any student who can tell me, is there any risk involved in this debt transaction or not? Anyone from DM2? I request the students to answer sir's question. Anyone? If anyone has missed the question, I'll repeat. I and Mr. Amlan, we meet up. We plan कि चलो business वो लोग कर रहे हैं, तो I will invest in his business. And he has a business plan of 1 crore investment, and he has plans to grow it by 50%. I decide कि I am not interested in what profit you make, what loss you make. I'll give you 10 lakh. By the end of the year, you give me 10% back. 10% return on that. So I give you 10 lakhs, you give me 11 lakhs back. He says, yes, we agree to a contract. So is there any risk I'm taking here, or there is no risk? Yes, I see a hand raised from Rohit. Rohit, Hi you can Rohit. unmute yourself and answer. Fails, then also you are getting 10% of it on that. Or if the business fails, then your money is gone, right? I couldn't follow you, Rohit. Can you just repeat your answer? Sir, if the business fails, then your 10 lakh is gone, na? Or if the business fails, Yes, then you're yes, getting. yes. Fantastic, Rohit. Mane, you are either a pro or you are just a genius. So correct answer. Many people say debt market is risky, but like Mr. Rohit rightly pointed out, if the business fails, then my money is gone. There have been several instances in the last few years. There have been big fund houses like I don't want to name them again because of the competition clause, but they have failed. They have not been able to give the return that has been promised. That debt funds, the debentures, they have actually not done that. So there is risk in everything. It can be more risk, it can be less risk. So equity comes with more risk, so more return. क्रिकेट है, बॉल उठा के मारेंगे, सिक्स होने का चांस है, आउट होने का भी सकता है. And debt has lesser amount of risk, but again a compromised return. So if I have to invest something for a period of 3 to 5 years, I may choose a bank FD, I may choose a debt fund where the risk will be lower and this goal comes out immediately. I cannot suppose I have a plan to have my son's birthday after 6 months. I can put that money in equity. I may lose
50% if the market crashes and चलो सन का बर्थडे इस होटल में प्लान करता उसके बाद वो ढाबे में कर लेते, ऐसा तो नहीं होता. But if there is a plan कि चलो there is an education plan for my son which is 17-18 years after birthday, I can go for even higher risk elements. In this equity risk category, there are different kind of funds broadly divided into large cap, mid cap, and small cap. If I don't go by bookish definition, but if you just have to typically keep your mind tab by the top 100 companies in India are known as large cap, 101 to 250 are the mid caps, 251 onwards are the small caps. And when we combine them in different ratios, they become multi cap, flexi cap, and a lot of other things. There are typically thematic funds also where we trust one thing. Suppose Mr. Rohit likes IT over others, so he can invest only in IT and he can make his return. There can be one more gentleman who believes banking is going to be the next big thing. They can invest in that. Some other people may also feel India is not their destination. We have to invest in international equities. So there are options. We can go either through equity route, जो स्टॉक मार्केट है हमारा, या तो म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू. क्यों मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि दीज आर गोइंग टू गिव यू द इंटरेस्ट इन रिटर्न रिटर्न. अब सबको मैंने ये तो बताने की जरूरत नहीं कि महंगाई हर साल बढ़ता जाता है. जिस कॉस्ट में मैं IMDR में पढ़ा था आप उससे ज्यादा दे रहे हो. जितने रेट पे बाइक आ जाता था हमारे टाइम पे उससे महंगा भी आता है. तो आगे जाके चीजें और महंगा होने का चांसेस है. So our money lying in a simple हमारे लॉकर में या ड्रॉयर में रख लेंगे तो it will not grow. It has to be in a place where more returns are there, and these returns are like average of cricketer. If Sachin Tendulkar's average in test matches is 56 runs, then he does not score 56 in every match. Probably when we take a 10 match string, there will be a 0, there will be 112, there will be 56, there will be 200, there will be 2 more zeros, there will be 1 more 40, like that. So we typically say equity market gives 16% return, but we give a projection of 12% for futures. People say, will it give it every year? No. Last 1 year has been fantastic. Many people have doubled their money. 1 year before that, it was a ridiculous return. So it is an inconsistent return, but over a consistent period of time, we beat inflation. So someone taking this advice and investment कल ही कर देगा equity में, तो they may lose their money because market is at all-time high. We don't know. We are not God. Only God and liars know the exact position of market. Rest all predict, project, and then they protect their interest. So we have to typically find how much money I can take my first risk upon. And if at all you start with a 1,000 rupee SIP or a small investment in any mutual fund, today there are a lot of brokerage houses जो हमारे टाइम पे नहीं थे. Zerodha and all have come up in a big way, and they have revolutionized the entire industry. I still use a different demat service, but the way these people have made zero brokerage and everything popular, there are many and many people entering market, and you'll be glad to know that I don't have the exact data with me, but in India, less than 5% people are investing in equity, and probably less than 10% people are still insured. So in insurance as well as in mutual fund equity, we have tremendous scope. There are more than 90% people who are not aware of these products. If they are not aware of these products, they will not buy these products. So if we make a career, जो हम second part में आएंगे, we can actually help them as well as we can make a good career for ourselves. We can earn big bucks. In US, investment bankers are kings, and in India, we are still in a learning phase. India is a growing economy, so there is plenty of opportunity available here. We'll probably cover that. So third part में हमने बोला कि once my emergency fund and my insurance is through, I should invest in म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी. बट हाउ शुड आई इन्वेस्ट? ऐसे ही कर देना है कि पैसा बचा है कुछ कर देंगे? नो फ्रेंड्स, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ गोल. सम टिपिकल गोल्स व्हिच आर कॉमन फॉर एवरीवन. रिटायरमेंट. यू मे हैव ए ड्रीम फॉर योर पेरेंट्स, उनको फॉरेन टूर पे भेजना है. अपने लिए भी कुछ सपना होगा कि ये वाला कार लेना है. सो दीज आर ऑल गोल्स. गिव अ टाइम टू ए गोल, और उस टाइम के साथ इंटरेस्ट डालो. फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज ए 25-year-old गाय इन दिस कॉल, एंड उनके रिटायरमेंट में 35 years का टाइम है, करेक्ट? And that person wants say 1 crore by the end of 35 years. So हमें अभी बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है फॉर ए 12% या 16% रिटर्न बनने के लिए. सो विल गेट समथिंग लाइक ए 700-800 रुपीज अभी से इन्वेस्टमेंट करने से रेगुलरली इट कैन बी मेड. It sounds simple, but going disciplined when your investment sometimes goes down by 50%, sometimes it grows becomes 5 times bigger in a short span. तो अपना एंजाइटी कंट्रोल करना मुश्किल होता है. मैं जब पहले मार्केट में पैसा डालता था, डबल हो गया, बेच दो. कोई जरूरत नहीं था बेचने का. ग्रेट कंपनीज दैट वी हैव सोल्ड जस्ट फॉर 100% प्रॉफिट. बहुत अच्छा लगता है देखे, बिकॉज वी आर यंग एंड वी लाइक मनी फ्लोइंग इनटू आवर अकाउंट. बट इन द लॉन्ग रन व्हेन वी रियलाइज वी शुड नॉट हैव सोल्ड दैट. दे आर ग्रेट कंपनीज. अभी बाय करना भी मुश्किल है, बहुत महंगा हो गया. सो इफ यू बाय विथ अ पर्पस,
कि मैं ये पैसा रख रहा हूँ अपने कार के लिए. Anyone who has an aspiration to buy a car in next 5 years, anyone, most of the people will be there. We can just pick up anyone gentleman or lady. Yes, अमलान जी आपने ही हाथ उठाया है. Yes, sir. Amlan, what is the tentative? What is the car you are looking at? What is the tentative budget of yours? Sir, I would buy a car under 10 lakhs, like somewhere between 8 to 10 lakhs. Okay. And you want a hatchback or a sedan or something like a SUV, because SUVs today are also coming at that cost. Sir, I'll prefer a hatchback. Okay. So suppose I assume you are going for i20 medium kind of model which comes between 8 to 10 lakhs. हम 10 lakh assume कर लेते हैं. But जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है अमलान, I think you have a plan to buy it when 1 year, 2 year, 4 years, 5 years. Sir, after getting the job, maybe within 2 to 3 years, once I pass out and get a job. I assume it as 3 years, and I assume the inflation as 5 to 6%. So typically, this 10 lakh will not become huge in 3 4 years. It will be roughly around 10 lakh, 10 lakh 15,000, 10 lakh 20,000. So you need not change the plan immediately. But if you have to start saving for that, and say assume you are getting your job in next 6 months, you start earning after 6 months. So you will typically have a period of 24 months or 30 months to get this 10 lakhs collected. तो आपने कैलकुलेशन वही रिवर्स में करना है कि आई नीड 10 lakhs in 25 months. I need to put say 40,000 rupees every month aside. Now this 40,000 will also give you some return. Those returns are your bonus. Always calculate कीजिए, when you calculate say 40,000 I will invest, so in a year you are investing 4,80,000, in 2 years typically I think 9,60,000. So your 9,60,000 has to become 10,50,000 or something, because we are talking about 2 years. I cannot take much risk with your fund. I cannot invest it in equity for higher return. You may lose it. So we will go with a debt or a hybrid kind of fund where equity and debt both are there, and then we can make this money. And there would be also some people who want their parents to go on a foreign tour. Their budget will be also different. So similar kind of calculation. There are a lot of online calculators available where you have to simply put what is the present value, what is the period, and what is the inflation amount in that particular thing. Then you get a typical value जितना आपको चाहिए उस day. And for that value, you do a backward calculation again, how much I need to save. If we go by this goal-based calculation, would there be any chance कि अमलान ऐसे ही ये पैसा रखे हैं, एक साल बाद उनका 1 लाख बन गया 2 लाख, उन्होंने सॉरी कितना दिया था एक साल में, 48,000 या कुछ दिया था, and it becomes something से डबल हो गया, वो निकाल देंगे क्या पैसा? नहीं, मेरे को एक साल पहले गाड़ी लो, वो नहीं निकालेंगे, बिकॉज उनका गोल 2 साल का है, वो तब तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड देन ही विल मेक ए बिग प्रॉफिट. इफ यू हैव ए पर्पस एंड यू ब्रेक इट मिडवे, do it only for yes, we are getting a signal from someone. Any question, friends? Sir, I think someone had unmuted them by mistake. I request everyone to keep their mics on mute. No issue. Sorry, sir. Sorry for the disturbance. अरे absolutely okay. I have been a student and हम लोग you all have been fantastic actually, and so I was coming to the same question. If there is a purpose of say 20 years down the line, someone wants to do a business and you are saving something for that, even if the money grows beyond a certain proportion, you will not feel like changing it unless the fundamentals of the investments have changed, or there is a tragedy in the family, or there is an emergency where even our emergency fund is not sufficient. So you decide a purpose for every investment. Without purpose, an investment is playing football in a ground where there is no goal post. आप तो खेलते जाओगे, tired होते जाओगे, but goal नहीं होगा. So have a purpose, have a goal, and then you start investing towards it. And if the goal is for a very short term, you go for FDs. If it is for a medium term, you go for a debt fund kind of setup. And if it is more than 5 years, equity is the best thing. उसमें भी small cap, mid cap, large cap, उसका पूरा details में जाएंगे तो अभी boring लगेगा. वो for some other day we'll keep that. Now, if you don't understand one business or one kind of thing, like I don't understand real estate, that is a great investment opportunity, but I don't understand that, so I'll not put my money there. Some people invest in gold because everyone else is doing it. Don't invest in any kind of business model which you don't understand. And whatever you have done, please review it periodically. If you have done ABCD fund, it may be great, it may not be great, but आप उसको हर 6 महीने में, एक साल में रिव्यू करते रहो, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहा है. And last and the most typical advice on personal finance is always have a mentor. Okay, Tendulkar is one of the greatest cricketers.
when he won the World Cup, the coach was Mr. Gary Krishnan, who probably has scored less number of runs, has played less number of matches than Sachin Tendulkar. So there is, in all rights, Tendulkar may know batting better than him, but still he had a mentor in Gary Krishnan. We all need mentors, we all need guide, we all need coach. My favorite sportsman, Mr. Bishwanath Anand, was once upon a time world champion for 5 times in a row. But still he had typically players from India and abroad helping out, even improving his game. So we all may know a lot of things, but we still need someone else to rely upon. So for any financial decision, you always have a mentor or a coach or someone whom you can trust, जहाँ आप openly बात कर सकते हो. And many people again treat finance as a free subject. अभी मेरा तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं फीस देता हूँ. लेकिन फिनेंस के लिए दोस्तों से पूछ लेते हैं जो एक्सपर्ट नहीं है और कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं. आई कीप ऑन मीटिंग पीपल, आई एडवाइस देम ऑन इक्विटी, एंड जैसे कि मैंने येस बैंक में 1.5 लाख लॉस कर लिया, लक्ष्मी विलास बैंक में उस जमाने में लगाए थे पैसा हो गया. एक कंपनी में खराब इन्वेस्टमेंट करके दे थिंक इक्विटी मार्केट इज बैड एंड दे हैव डन दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द टीम और समवन एल्स. तो मार्केट का एक लाइन है, मार्केट में हमें चाहिए पारखी नजर, बड़ा सा जिगर और बहुत सारा सबर, क्योंकि पेशेंस के बिना रिटर्न नहीं होगा. और बहुत लोग ये तीनों को छोड़ के सिर्फ खबर पे ध्यान देते हैं, और जहां आपने खबर पे ध्यान दिया और वो खबर गलत निकला तो आपका कवर निकल जाएगा. इसीलिए वी विल नॉट रिलाई ऑन एनीथिंग लाइक ह्यूमर. ये अपना पैसा है, हमारा हार्ड अर्न मनी है, तो वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. और ये जो था ये जेनेरिक मैंने फाइनेंशियल प्लान बोला, उसके बाद टैक्स सेविंग इसके अंदर आता है, उसमें ईएलएसएस ऑप्शन है, देयर आर टर्म प्लान्स विच गिव यू टैक्स बेनिफिट, देयर इज एनपीएस, but probably we can keep it all for a different session. It's already 10:42. If we don't cover the other important part of the discussion, that is what are the career opportunities after doing a typical course in finance, it will not be great. And before coming to that, I will again say again, I am not probably at an expert in financial careers because I have done my own education in marketing and HR. But typically working in finance industries, I know some of the things which may be useful to you. So in finance, there are typical 8 kind of jobs, out of which 7 kind of jobs in fact. जिसमें से 4 can be related to personal finance, and we'll briefly touch upon them. And I have some materials. I'll also read it out. I'll try not to make it monotonous. But before we go to the career prospects, any of my friends who has a doubt in anything that we discussed so far or anything which is not clear, we can stop here for a minute and we can review that. कि ये emergency fund है, term plan है, health insurance है, या म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना, डेट इन्वेस्टमेंट करना, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट. इफ एनीवन इज स्ट्रक एनीवेयर हु डज नॉट अंडरस्टैंड anything in that, so they can tell us, they can stop us and ask us. I'll wait for probably 30 seconds to 1 minute for that. Students, if you have any doubts, you may raise your hands. Yes, sir. Rahul, you can unmute yourself and ask your question. Yes, good morning, sir. Hi, Rahul. Yes, so my question was, as we all are young generation and mostly are in the early 20s, so after we start earning, whether we should have all our exposure to equity, considering the India is on a strong growth path, or should also be considered some debt instruments for investments? Rahul, typically to put it across, everything going into, if you put all your money in one pocket and say it is rough, then you will be probably never trusting that pocket again. I was giving you example of few of my friends who have probably lost 1.5 lakh, 2 lakh in their early days in one stock and or a couple of stocks, and they have never invested in equity. So my suggestion would be, when you start your career, when you start earning, make a list of few of your important goals. You might have a plan for 1, 2 years, 3 years. Don't put equity into those scheme of things. Any plan that comes 3 year, 5 year, 10 year or more, for those goals you have an equity. Or if there is one more goal, जो हम typically discuss in the wealth creation. Some people don't have a fixed goal, उनको बस पैसा बनाना है. In that case, you can give yourself an exposure to equity. But I would always say, do your own research before investing in a company. You should not give whatever is the condition. If your age is say 20s में मैं 20 ही assume करके चल रहा हूँ, the typical there is a, आपका जितना एज है उतना आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. तो कुछ भी हो जाए, आपका 20% पैसा एफडी में या डेप्ट में होना चाहिए, बाकी 80% तक आप उधर ले सकते हो. If my age is 38 right now, then I should have around 35 to 40% of my money in debt, despite liking equity. I have a biasness towards equity. जैसे आप इंडियन क्रिकेट टीम को आप पसंद करते हो और अदर टीम्स, बट फिर भी मेरा अराउंड 65% है अभी इक्विटी में, मैं 3% का इधर उधर है. बाकी मेरे को आइडियली 62% इक्विटी में करना चाहिए था और 38%
डेप्ट में, आपका एज मान लीजिए 21 22 है, तो उतना परसेंट डेप्ट आपका होना चाहिए पोर्टफोलियो में आइडियली. एंड देयर इज नो फिक्स्ड रूल. मैंने पीपल आर डेफिनेटली हैव डिफरेंट रिस्क एपेटाइट्स. आप अपने ही दोस्तों में देखते होंगे, कुछ लोग रिस्क लेते हैं स्पीड बैक चला के, कुछ लोग बहुत धीरे जाते हैं. तो उसी तरह से लोग अपना इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं. So, what is your age, Rahul, if you don't mind? 24. 24. So, Rahul, you can always keep whatever is your surplus money, 75% आप इक्विटी में डाल दो एंड रेस्ट 25% को डेप्ट पे रखो. दैट विल बी ऑलवेज ए लिवरेज. और डेप्ट पार्ट में आप गोल्ड भी इंक्लूड कर सकते हो. गोल्ड हैज कम एज ए वेरी बिग इन्वेस्टमेंट टूल इन द लास्ट फ्यू डेज. गवर्नमेंट हैज introduced sovereign gold bonds and all. So that will be a typical ratio to look at. And again, I am not a professionally certified expert. You can, if you are investing in equity or anything, you should always consult someone who is a professional, who is certified professional, to be very precise. So that because मेरे assumption पे आपने कुछ decision लिया गलत हो गया तो पैसा आपका लॉस होगा और मेरा responsibility नहीं रहेगा. That's why I'm telling you. Yes, Hope sir. I have answered to your satisfaction, Rahul. Yes, sir. Thank you. Okay. One fascinating thing, Rahul, Rohit, both names were also in my class and they were great friends. So somehow I am recalling my own friends, Rahul Jain and Rohit Agarwal were there. We have different Rahul and different Rohit, but the same names popping up again is actually an amazing experience. Thanks. Any more questions, my dear friends, on personal finance part before we move to the career option? Students, if there are any more questions, you can raise your hands. Yes, I see a hand raise from Rohit. Rohit, you can unmute yourself and ask a question. Hi, Rohit. What you're saying is distribution in different instruments is the key right now, right? Yes, actually, it is a diversified portfolio that I am talking about, Rohit, because even in equity, he should not put entire thing into large cap or mid cap or small cap. If he is more of a risk taker, he can go for a little bit more exposure in small cap and optimize his return. And if he is the play it safe kind of guy, he can have a large cap or a flexi cap to support his needs. It is always, when we call it diversified portfolio, to be very precise in banking and financial terms. And so, how would you differentiate trading and investing? Like, is putting time in trading and learning trading better than investment, or is investment? I'll tell you, I know some of the people who are making big money in trading. Personally, I'm not a trader. I do not even know the definitions of future and option. But trading, I personally believe, is a full-time business. You have to be attentive in market. If you are not in a job, if you want to make money, you have to watch market. There are candles, there are charts which you have to study, and you have to use multiple devices at the same time. Typically, in a working culture, आप अगर कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो 9 to 5 or say 9 to 7 like us, it will be difficult to give honestly time to the market. 9:30 से 3:30 market खुलता है, and in that period, in fact उससे ज़्यादा time खुलता है pre open वगैरह मिला के 9 o'clock से open हो जाता है. But if I cannot find time to watch market continuously, trading would not be my cup of tea. Investment, it is for everyone. You can do some research in weekend, you can do some research in day, and you can buy something and forget it. Both are good. I know a lot of people who are both investors as well as traders. They make money both ways. They have made it a full-time job. There are many people who don't find time for trading, तो वो लोग आराम से अपना इन्वेस्टमेंट पे शांति लेते हैं. और कुछ लोग हैं वो अपने टाइम निकाल देते हैं, वो अपने जॉब के अंदर से भी टाइम निकालते हैं. मे बी देयर जॉब इज नॉट दैट मच डिमांडिंग, या थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं कि क्या मैंने मिस हो गया एक ट्रेड तो चलेगा, एंड दे गिव लोअर एक्सपोजर. My only request to people who trade is don't over leverage. There are brokers who give you 20 times, 40 times leverage on your money. It is basically like, suppose Rohit goes to market with 1 lakh. The broker says, I'll give you 40 lakh worth of stocks. If you make a profit, it is your profit. If you make a loss, it is your loss. And in those cases, sometimes we win big and it makes us happy, and also sometimes we lose big. And in the early days, if we lose big, then we have a negative impression about one particular instrument, one particular investment pattern. That is why it will always be kind to go slow. And for trading, there are professional courses available. Don't go by Telegram channel, Facebook forwards, या news channel भी देख के मत कीजिए. Please understand, we don't pay the news channel guys. They will not work for us. They are paid by some other entities. So we have to do our own research. आपने पढ़ा, आपने खुद चूज किया, आप वो ट्रेड करोगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा. टिपिकली एक चीज क्या ट्रेडिंग में होता है, if there is a stock at 100 rupees, the advisor will tell you buy it only if it crosses 105. एंड समन में फिर कि 100 में नहीं खरीदते 105 पे क्यों बोल रहे हैं.
क्योंकि वो स्टॉक का एक रेशियो रहता है, वो 5 ऊपर गया तो उसके बाद ऊपर जाएगा, उनको पता है। एंड सेल इफ इट इज कमिंग टू 95, तो मुझे लगता है 100 पे नहीं बेच के 95 पे क्यों सेल करेंगे। सो दीज आर ऑल टेक्निकली डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, टेक्निकली कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स। मे बी जस्ट एमबीए या फाइनेंशियल एजुकेशन सफिशिएंट नहीं होगा, आपको एक दो एनआईएसएम का कोर्स भी करना पड़ेगा, थोड़ा स्टॉक मार्केट के कोर्स करना पड़ेगा, प्रोफेशनल कोर्सेज उसके लिए अवेलेबल। इफ यू डू दैट और यू गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड बाय ट्रेनर्स जो इसको प्रोफेशनली ट्रेनिंग करते हैं, यू विल बी एबल टू डू गुड ट्रेड। मेनी पीपल डू ट्रेड जस्ट दूसरा दोस्त कर रहा है उसने प्रॉफिट कमा ला करके, और वहां पे उनका लॉस हो जाता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल विथ मनी मीट विथ पीपल विथ एक्सपीरियंस। आफ्टर सम डेज जिसके पास एक्सपीरियंस रहता है वो मनी खींच लेता है, और जिसके पास पैसा था उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्तों का एक्सपीरियंस खराब हो। सो please, well, just be careful. It is actually a full-time business, and you all can do it. You can make big money in that also, but only if you know what you are doing. You have a strategy to. There are a lot of strategies in trading. You have to do that. For investment, which I am doing, it is just about discipline. आपने इतना पैसा असाइड रखना है, इतने से इतना म्यूचुअल फंड में जाता है, इतना स्टॉक में जाता है, इतना एफडी में जाता है, इतना आरडी में जाना है, और ये मेरा इस पर्पज के लिए है। और सिंपल उसके बाद उसको पीरियडिकली रिव्यू करना है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ट्रेडिंग इज मोर ऑफ ए साइंस एंड लॉट ऑफ रिसर्च, एंड बोथ can give you good amount of money, and you can manage both also if you are good at multitasking. I am not a trader. I am a typically investor kind of person who likes a company, and we get married to the company. We invest with it till the time probably my son will sell it. I will not sell most of my investment. जो करना था हमने कर दिया, but we do all the research before buying it. After buying we don't only management में कुछ issue हुआ, कुछ बड़ा उथल पुथल हुआ तो चलेगा। या प्रणव जी, you have a question? Sir, am I audible? Yes, Pranav. Yes, Pranav. Sir, based upon your experience, would you like to refer any of the book which is most important to read? Like recently, I have completed that How to Make Money in Intraday Trading by Ashwin Gujral. So, similarly, is there any book which you would refer that would cover some of the good strategies and some advanced level things? I'll tell you again. I am not the intraday kind of guy. I am a long-term kind of guy. Okay. I have watched Ashwin sir's video a lot. I have not read his books yet, so Okay. probably I'll not be the best person to tell this. But I have many friends who do trading. I'll get some books from them in Telegram, and I'll probably share it across to you through some medium. Thank you, sir. That would be great. I see a hand raise from Vasu. Vasu, you can unmute yourself and ask a question to sir. Yes, sir. Sir, I was asking what your thoughts about if we want to go for value investing. That is actually a fantastic tool. Typically, people who have some knowledge of finance, they understand the intrinsic value of a company. Right now, if I ask you, is Airtel more valuable or Reliance? Probably you will be able to tell. And those people who do not have a strong finance background, they fail it. They sometimes find cheap companies like the Vodafone as a value company. If you know how to calculate value, like Zomato is a recently listed company for which India has divided opinion. Some are valuing it at 41 rupees, some are valuing it at 100 odd rupees, some are saying 240 rupees. So if you can calculate fair value for yourself, this is a fantastic tool to go about it. I personally, I'm not into value investing in stocks, but I have some value mutual funds like Tata has a fund, Tata Equity PE fund, that is giving me great return, and one HDFC Capital Builder fund. So I personally trusted the fund manager's capacity over my own capacity of identifying a value fund, because I was not a typical financier. But over a period of time, I have identified some value stocks, which probably I'll be adding to my portfolio in the near future, depending on when I get the correct price to add them in my portfolio. Basu, was I able to answer your question up to your satisfaction, or is there anything more you are looking at? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. I see a hand raise from Pranav. Pranav, you can unmute yourself and ask a question. Hi, sir. Sorry, but I do have one more question. Sure, sir. Your questions Yes, sir, are actually more welcome, sir. Yeah, sir. Thank you. Like you recently mentioned, sir, you take the stocks for long-term investment. So I just want to ask you, sir, do you set any a specific percent of target? Like if the target had been hit, then you should then sell the stock, or
Is there can you just give a short brief about like a strategy that is more useful for long term? I'll tell you, I will sell a stock when number one, my investment objective is met. मैंने जो पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया था वो हो गया पूरा, then I'll sell that stock, irrespective of future value proposition है नहीं. Secondly, there is an immediate requirement which cannot be met by the amount of emergency funds that I am having presently with me. एक medical या कुछ issues हो जाते हैं जहाँ I have to break that out. And third, जो मैं कभी नहीं चाहता हो मेरे कंपनीज के साथ में, सॉरी मेरे होल्डिंग्स के साथ, वो है इफ देयर इज अ चेंज इन द कंपनीज ओन स्टैंडिंग. वो जिस तरह का कंपनी, सपोज यू इन्वेस्ट इन ए कंपनी लुकिंग एट सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि ये इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, so I would not stay with that company. For example, there is a stock. One of my close friend, my classmate Sanjeev Singh is a fan of that stock. IDFC First Bank. Many people made 300% profit in the short term, and they started asking me, should we sell it? I asked them, why have you invested in the company? Because the CEO is a great person. Everybody said. Has the CEO changed? No. Has the fundamentals changed? No. Then why do you want to sell the stock? Only because you have got a profit. So if that was the only target, then please sell this stock. If that was not the target, stay with the company. This may go up, down, because देखो आपको जो 32% 30% एक साल में देगा, नेक्स्ट साल हो सकता है 10% हिट ले ले, लेकिन वो तो होता है, इक्विटी में है तो ऊपर नीचे होना पड़ेगा. तो इसीलिए आप तीन चीजें देखो सर. आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, कोई लेफ्ट राइट सेंटर नहीं देखना है, प्रॉफिट और लॉस हो, आपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मीट हुआ, चेंज कर लो. दूसरा है आपके घर में बहुत ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट है और आपको ये पैसा तोड़ने की जरूरत है, कोई एक बैकअप नहीं है, किसी का लाइफ का सवाल है, किसी का हेल्थ का सवाल है, पैसा निकाल दीजिए, कोई लॉस फायदे मायने नहीं रखता. तीसरा है कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो गया, आप जो सोच के इस कंपनी में डाले थे वो कंपनी कुछ उल्टा ही निकला, आपके समझने में गलती हुआ था, तो गलती हुआ तो सुधार देते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं उधर से करके. एंड डोंट जस्ट बुक प्रॉफिट फॉर द सेक ऑफ इट. सब बोल रहे मार्केट महंगा है निकाल दो, उसके लिए मत करो, वो ट्रेडर टाइप का माइंडसेट हो जाता है. उसके लिए यू हैव टू गो फॉर कोर्सेज, फिबोनाची नंबर से लेके बहुत चीजें आते हैं, वो करके हमें करना पड़ेगा. दिस इज माई ओन स्ट्रेटेजी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ये तीन चीजें नहीं होने से मैं चेंज नहीं करूंगा, बट मैं ऐसा नहीं था. मैं 7 साल पहले तक आई यूज्ड टू सेल स्टॉक्स जस्ट लाइक दैट. अभी लास्ट 7 साल में ये चेंजेस हुए हैं. उससे पहले मेरे को भी प्रॉफिट दिखता था, 100% हो गया तो चलो बेच दो, आईपीओ मिल गया तो बेच दो, इस टाइप का था. वो होता है विथ एक्सपीरियंस, मे बी वी चेंज इट. आई हैव आल्सो गिवन ए लॉट ऑफ मनी टू एक्सपीरियंस पीपल व्हेन आई वाज हैविंग मनी बट नॉट एक्सपीरियंस. नाउ प्रोबेबली इट्स कमिंग द अदर वे अराउंड. Yes sir, right. At the start we just go on to like just profit चाहिए ये हो रहा है, मतलब ठीक है मार्केट मूव हो रहा है, मतलब बाय करते शेयर करते, स्टार्टिंग में ये होता है सर. बट व्हेन वी डू मोर इनटू फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस देन वी नो कि नहीं यार कुछ तो गलती कर दिया था हमने पहले, तो फिर वो समझ जाता है कुछ दिनों बाद. Yes. You will meet some friends. I'll tell you, you will meet some friends जो आपको सिर्फ बोलेंगे उनका प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस नहीं हुआ है. तो हो सकता है उन्होंने 1 या 2 कंपनी में इन्वेस्ट किया. कोई भी इंसान जब 20 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, लॉ ऑफ एवरेज सेज कि उसका 2-3 कंपनी लॉस में जाएंगे ही जाएंगे, जितना बेस्ट मार्केट हो. बिकॉज वी आर नॉट गॉड, वी आर ऑल इन्वेस्टिंग विद सम कैलकुलेशन एंड आवर कैलकुलेशंस मे गो रॉन्ग. Yes sir. We had one more hand raised. Yes, there is another hand raise, and it is from Prathamesh. Prathamesh, you can unmute yourself and ask your question. Hi Prathamesh. Yes, sir. So my question is, sir, as we are all are beginner in investing, so which broker should we choose? So which I mean, which has low fees and consideration these things? I generally do not promote anyone, but Zerodha as a broker has come up of its the investors uh, are raising them high. जो लोग उसके through invest कर रहे हैं. I am investing through HDFC Securities. They have a costly setup, but the interface is quite friendly to me, and I have been using it for long. But for beginners, I would recommend Zerodha. And they have good support team, और उनके दोनों both the owners are actually great chess players, so there is one more affinity to like them. So Zerodha is probably a broker I will recommend to anyone. Disclaimer, I am not using them, but they are great. They are doing great in their own field. Thank you, sir. Anyone has any more questions can raise their hands. I can see Yes, there is a hand raise from Shubham.
Shubham, you can unmute yourself and ask the question. Hello, sir. Hi, Shubham. Yeah, just wanted to ask on what basis you decide in which stock to invest? I mean, do you use any kind of indicators in charts? No, indicators are again for a lot of professional experts. I have my own actually WhatsApp group which I run, where we have a team of people who keep on shortlisting different names based on whatever study material we have, website, blogs, everywhere. And as a team, we think in what are the positives, negatives of these companies, and we rate them. We give them some scores on our own. We are not professionals. We between ourselves we decide on quality of a company. We give this much mark on quality of management, on their returns, ROC, everything. We give certain marks, and in that ratio, probably we come out with a list of 4 5 stocks which we recommend to our uh, three members. Obviously, my friends, my colleagues who are part of that group, and some of them, depending on their risk appetite, invest in that. It is typically an internal rule formed, which is not at all managed by professionals. So I would not recommend that. Probably one thing that I will say ki I read a lot to get a lot of names so that our research becomes easier. So in early days, if you spend more time reading about different companies, for example, in banks, there are n number of banks. You have to invest in one. आधी जेवण Is like HDFC Bank, a credit card पे ban था. Doesn't matter. They have removed the ban from that, so there can be a great news for that bank. But same time pe, like my own organization, the MD resigned last week, so it can be a temporarily negative news, but as insiders we know that next MD ka naam aate hi this negative becomes again positive. So we have to rely on a lot on news, our internal sources. We don't do insider trading, but we have a lot of people in different places who keep on passing important information. Based on that, we take decisions, and we don't buy actually every month. We wait for 3 4 months. देखो सैलरीड क्लास है भाई, इतने करोड़ रुपए तो लेके नहीं बैठे हैं कि एक बार में खरीद लेंगे. हम 3 4 महीना वेट करते हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, और जब लगता है कि नहीं दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, सो वी ऐड इट. लाइक मैंने लास्ट फ्यू डेज में फॉर एग्जाम्पल आप देखिए एक कंपनी लास्ट ईयर हमने ऐड किया था, CDSL. CDSL इज बेसिकली मैंने आपको मालूम होगा सेंट्रल डिपोजिटरी जो है आपका डीमैट अकाउंट वगैरह उधर खोलते हैं, क्योंकि उससे पहले एक न्यूज है LIC का IPO आएगा. LIC का IPO में LIC के जो पॉलिसी होल्डर है उनको भी प्रीफरेंशियल नोट मिलेगा. तो बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुल रहे थे. डीमैट अकाउंट खुलता है तो बिजनेस कहाँ आता है. और ये जो एक वेब सीरीज इंडिया में चला ऑफ मिस्टर मेहता, उसके बाद नए इन्वेस्टर आने लगे, उनको भी डीमैट अकाउंट खोलना है. तो ये डीमैट का सारा पैसा ट्रेडिंग होकर CDSL में आता था. तो हम लोग अपने सारे क्लाइंट्स के थ्रू CDSL सबको रिकमेंड करने लगे कि दिस लुक्स गुड. और वो स्टॉक भी 300 रुपए से 500 तक में बहुत चला. उसके बाद हमने खरीदना बंद कर दिया उधर से. वो 1000 के ऊपर गया, 1500 के ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे अभी 1100 रुपए में है. तो वी गो बाय दोज रिसर्चेस. 3 4 साल पहले इंडिया में बीफ बैन होने का एक कंसेप्ट आया था. तो दैट टाइम आवर क्लाइंट्स स्टार्टेड बाइंग वेंकीज, बिकॉज वेंकीज वाज चिकन मैन्युफैक्चर में एक ही प्लेयर था. कुछ लोग जो उसको मिस कर गए, वो SKM एक नाम से एक कंपनी है जो अंडे का मैन्युफैक्चर, एक ही लिस्टेड कंपनी है, वो करने लगे. तो हम न्यूज बेस्ड और न्यूज का रिलायबिलिटी भी देखते हैं. कभी कभी न्यूज गलत भी चला जाता है. एक बार एक न्यूज था कि फिनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर करेंगे 2 व्हीलर में ये सब डिस्काउंट होगा, तो हमने 2 व्हीलर के स्टॉक्स पकड़ लिए और उसके बाद वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ, खत्म हो गया स्पीच. तो जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं हुआ. तो वही खबर पे रिलाई करेंगे तो थोड़ा बहुत रिस्क है, बट हमारा सोर्स थोड़ा रिलायबल रहता है, इसलिए उस पर चलता है. एंड वी इन्वेस्ट 3 4 मंथ्स में एक बार करते हैं, तो साल में 4 स्टॉक खरीदेंगे तो बहुत स्लो जाते हैं. इसीलिए बड़ा टीम है, काम ज्यादा करते हैं और एक एक स्टॉक खरीदते हैं. तो बहुत ज्यादा स्टॉक को हम रिजेक्ट करते हैं. आप जब कैट का एग्जाम में आप क्या करते हो, सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे, वी रिजेक्ट लॉट ऑफ क्वेश्चन. सो वी फाइंड रीजंस व्हाई द कंपनी विल फेल, एंड जहां पे हमें बहुत कम रीजन मिलते हैं फेल्यूर के, वहां हम बाय करते हैं. आई नो दिस क्वेश्चन इज नॉट अप टू योर सेटिस्फेक्शन, बट एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है वो हम शेयर नहीं कर सकते ग्रुप में, बिकॉज इट इज नॉट प्रोफेशनल टू शेयर, एंड वी आर नॉट ऑल्सो प्रोफेशनल्स टू शेयर दैट. वो हमारा कुछ बायसनेस उस पे आ जाते हैं. वी प्रिफर certain things over other things, which is probably not correct, which is giving us results now because it's a bull market. Bear market also we may make more losses than a regular investor. That's it. Yes, sir. Means based on fundamental analysis, mostly you choose. Yes, it's all fundamental analysis. कोई भी इंडिकेटर या इमीडिएट टेक्निकल चार्ट हम नहीं देखते, क्योंकि हम कुछ भी 3 4 महीने के लिए नहीं उठाते. बट हाँ, अगर टेक्निकल बहुत नेगेटिव है तो हम रुक जाते हैं उसको खरीदने के लिए. बहुत सारे एप्लीकेशन है एक्चुअली, स्टॉकेज है, स्क्रीनर है, जिससे आपको मैंने फिल्टर आउट हो जाएगा. वो फिल्टर आउट होने के बाद यू आर, देखिए आप 10 कंपनी से स्टार्ट करेंगे, आपको 2 3 मिलेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा.
बट ऐसा नहीं था सर। अर्ली डेज हम ऐसा सोचते थे कि आज ए से एक स्टॉक खरीदेंगे, तो ए से जो पहला कंपनी दिखा वो खरीद लेते हैं, वो प्रॉफिट हो बुरा हो उस टाइप का था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस हैज कम। तो पहले छोटा छोटा पैसा लगाते थे, रिटर्न अच्छा आता था, लेकिन अमाउंट कम था, इसीलिए टोटल वैल्यू देखो आपने 5,000 रुपया लगाया, 20% भी मिल गया एक दिन में, तो 1,000 रुपये बनता है। अभी थोड़ा बड़ा लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वी गो विथ लिटिल बिट, वी आर ऑल डिफेंसिव एक्चुअली। हमें पैसा कमाने से ज्यादा डर लगता है पैसा ना खोए, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव होके जाते हैं। सो प्रोबेबली नॉट ए ग्रेट मेंटर फॉर पीपल इन दैट रिगार्ड। we believe in safety of capital but still we invest in equity, so we go with bigger names जहाँ पे थोड़ा कैपिटल कम बढ़े लेकिन बढ़ता रहे। Okay, sir. Thank you. Students, any more questions? Yes, I see a hand raise from Rahul again. Rahul, you can unmute yourself and ask the question. So I had one more question. So Yes, sir. basically, what is the thumb rule for averaging down the stocks? Suppose if we buy a stock at 100 rupees, it goes down to 80 rupees. So whether we should put more money into that or we should just wait to reach that price? नो कैलकुलेशन ऐसा रखा, आप 100 रुपए में रखते हो तो नीचे का डाउनवर्ड एवरेज शुड बी डन एट 62, नेक्स्ट एट 38, नेक्स्ट एट 23, ठीक है, और ऊपर का 162। ये फिबोनाची का सीक्वेंस है एवरेजिंग करने के लिए, कोई करेक्ट या रॉन्ग नहीं होता, जो मैं फॉलो करता हुआ है। एक स्टॉक 62 में मैंने खरीदा, नीचे में 37 में खरीदूंगा, 162% और 62% ऑफ इट, दैट इज माय थ्योरी। तो 23, 37, देन इट बिकम्स 62, आफ्टर दैट इट बिकम्स 100, देन 162 इन दैट रेशियो। सो एक कंपनी का जो प्राइस पे हम खरीदते हैं उसको हम नहीं देखते, हम देखते जो प्राइस पे वो एक्चुअली बहुत दिन रुक गया है। मैंने एक रहता है कि एक स्टॉक आता है लेकिन वो 1100 से 1200 के अंदर चल रहा है, तो उसका एक एवरेज हम पकड़ लेते हैं। आई में परचेज 10 रुपए हायर और 10 रुपए लोअर, बट उसका उसी हिसाब से एक ट्रेंड मिल जाता है। बट टिपिकली इट मे नॉट वर्क, डाउनवर्ड एवरेजिंग इज समथिंग विच इज नॉट रिकमेंडेड। अगर मार्केट क्रैश किया है अलग बात है, बट इफ द कंपनी इज डाउन यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई इट इज गोइंग डाउन। इफ द फंडामेंटल्स आर गुड, द मार्केट का रिएक्शन है कोविड के कारण जैसे लास्ट ईयर गया था, तो इट्स ओके। अदरवाइज देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स व्हिच वी डोंट नो। वन मिस्टेक दैट आई डिड, आई रिमेंबर, यस बैंक, आरबीआई डिसाइडेड कि चलिए इनका चेयरमैन को सीईओ एमडी को निकालना है करके, शेयर प्राइस फेल एंड हमें लगा कि कंपनी कहीं ना कहीं निकाल लेगा, ये चीज बड़ा कंपनी है, हमने और ज्यादा नीचे से खरीदते रहे, लेकिन इट हैपेंड टू उनके बुक्स और रिकॉर्ड्स में प्रॉब्लम थे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, एंड वी लॉस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट। एंड सेम डे डीएचएफएल एज अ कंपनी क्रैश 50%, 60% ऐसा कुछ डे एंड तक क्रैश हो गया था। आई डिडंट बाय दैट अगेन, बट मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स बॉट इट एट डिस्काउंट डाउनवर्ड एवरेजिंग करने के लिए, but the company went on to become bankrupt. If something actually falls down heavily, we have to understand why so many educated people are selling it off. If they know this company is good, fundamentals are good, why they're selling it off? There might be something fishy. Always see what institutions are doing. Don't go by one or two big investors. Big investors sometimes, not always, can also manipulate markets. But what institutions are doing, you check that FII data, DII data. If institutions are selling it, they have more access to information than us. They are professionals in that. In that case, we should do our intrinsic research, and if we find something fishy, we should get out of the company as soon as possible, even at a loss also. Okay, sir, got it. Thank you. But average करना है तो 100, 62, 37, ऊपर 162, अपवर्ड एवरेज भी कर सकते हो। तो ये थ्योरी एक बार हम 1-on-1 डिस्कशन कर लेंगे। Okay, Rahul. There is a hand raise from Rohit. Rohit, you can unmute yourself and ask the question. So where do we keep our stop loss in investing? Like you were talking about Fibonacci levels. So one level before you're keeping the loss, and also No, AI data. sir, I actually am a bad investor. I don't have a stop loss. I like a company, I buy it. I just told it for Rahul's calculation. I generally don't do downward average, upward average. Once we are convinced on a stock, we buy it, and only if the fundamentals change, something is drastically wrong. I have only done two stocks downward averaging. One is Action Construction Equipment, ACE. They make cranes, and one is BEPL, Bansali Engineering Polymer Limited. Because I purchased them at real high values like 200, 188 इस लेवल पे खरीदा था। Then it was available in 40s. तो मैंने दोनों को 40s में बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद लिया, एंड प्रोबेबली जो थ्योरी मैंने बोला वो मैंने फॉलो भी नहीं किया था। मैं बहुत ज्यादा 1/4 डाउन आने के बाद उसको खरीदा, एंड दिस स्टॉक्स आर बैक टू द ओल्ड लेवल अगेन, एंड आई एम एट सम प्रॉफिट इन दिस स्टॉक्स।
a decent profit to be very precise. But I am not a disciplined follower of this theory because we have a fixed income level और कभी वो price मिलता है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम खरीद भी नहीं पाते. And sir, you were talking about FIDI data, right? So the data that I still, yeah, that FIDI देख सकते हो दादा, insider information देख सकते हो. एक application है stock edge करके, EDGE stock edge. उसमें you get all these transaction data. If for a company, if the promoters are actually losing out their shares, if in a company there are insiders, the employees, the board members are selling their shares, so we generally have it a negative implication. And FIDI is actually change the market story completely. So we should always see why they are selling. देखो आप भी कुछ सेल करते हो तो क्यों करते हो? हमने 3 चीजें बोला, इसके लिए मैं सेल करता हूँ. आपका भी कुछ थ्योरी रहेगा. खाली प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो सब लोग सेल नहीं करते. तो अगर सेलिंग का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, you are not sure, then it is always better to exit. Not to exit, in fact, not to do downward averaging. If you don't have a reason to buy, why should you buy it? No, so what I was asking is that NSDL ka data, the chart about FIDI investment, how trustworthy is that? Probably I am the wrong person to comment. I use different charts. I am the wrong person to comment on that, Rohit. I am not an expert in that. I'm sorry. Okay. I see a hand raise from Rohan. Rohan, you can unmute yourself and ask your question. So hello, sir. So, sir, my question is, should we enter into ITC or not? I mean, is it the right time to enter into ITC? ITC probably had more jokes than anything else in the last years. Personally, I am invested in ITC. I have purchased it thrice in my life, and I'm not making huge profit on that. In fact, I'm at a loss, technically a small amount of loss. But if in that field you have to enter, probably Tata Consumer is one of my favorite companies in FMCG space. And if you want ITC just for the sake of price, ITC is probably well poised, and since all have rallied and this brother has missed out, I think they will pay back hugely. But I am not a professional advisor. If you want to buy or sell any company, you should talk to someone who is a professional. You should take their advice or not. Personally invested in ITC. Right now, recent investments in FMCG sector are going only to one company, that is Tata Consumer. Okay, sir. I'll just take a sip of water, friends. I have not talked for 1 hour continuously. Yes, 1 minute, yeah. Yes, sir, sure, sir. And I just wanted to say we should ideally move to the second topic now, otherwise we may run out of time. If there are more questions, we should take that up. Maybe in a different session, there are a lot of social medias that are available. Second one, before I start, I'll say कि I may know something about personal financing. Personal financing के career के बारे में मेरे को idea बहुत ही कम है. So most of my data are research based, and after I have talked to people who are experts in that, जो मैं कुछ दोस्तों का और seniors का नाम बोल रहा था, उनसे बात करके, and I have made some notes. So there are typically, people say there are 7 kind of careers available in finance. Those who are studying finance, those who are experts, those who want to even do business of their own, they don't want to do a corporate job. And out of the 7, 4 are typically into this personal finance kind of things, way closely related, and 3 are not. The 3 which are not, on which we'll not discuss a lot, are public accounting, corporate finance, and probably compliance and internal controls. जो होता है, जो 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे. एक है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक होता है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो आप में से बहुत लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे, बिकॉज अभी अगर पढ़ाई करते हुए आपको बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में चीजें पता है, जो प्रोबेबली हमें नौकरी करने के 3 साल बाद पता चला, तो आई कैन सी स्काई इज द लिमिट डेफिनेटली फॉर यू. जैसे तेंदुलकर सर से विराट कोहली सर का एवरेज बहुत ज्यादा है, तो वी प्रे टू गॉड दैट यू ऑल मेक इवन बिगर रिटर्न्स एंड बिगर परसेंटेज ग्रोथ इन योर लाइफ, all these things. And third and fourth, apart from these, one is risk management, one is the financial planning. तो अगर हम इन चीजों को थोड़ा स्लोली डिटेल्स में कवर करेंगे, मैम आई विल बी रीडिंग आउट अ लिटिल बिट, सो आई एम कीपिंग द कैमरा ऑफ. Out of the 7 things I said, there are 4 things which relate to our part. One of them is investment banking. You could have seen a lot of movies. Hrithik Roshan becomes
an investment banker and US के movies जो देखते होंगे तो देखोगे investor banker का life एक अलग किस्म का होता है. Truly it is. These people actually make big amount of money for a lot of big investors. लोग there is a नाम खराब होता है, बहुत लोग बोलते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट करते, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं करता. दिस पीपल आर प्रोफेशनल्स. यही चीज वो थोड़ा जल्दी से जान लेते हैं, जैसे आप में से कुछ लोगों को पहले से पता है, एंड दे प्रोफेशनली ग्रो फास्टर देन अदर्स. दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज एक्चुअली वेरी प्रेस्टिजियस कैरियर. आप ये फिनेंस का फील्ड का सबसे मोस्ट शॉर्टेड जॉब आप बोल सकते हो है करके. एंड इसका पैकेज से लेके प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों one notch up than others. These are people who actually remodel the financial decisions of their clients. Their work involves working with a lot of data and numbers. They're basically the mathematician plus accounts experts, and they introduce decisions that actually customers का पैसे को दुगना तिगुना चार गुना बना सकते हैं. These people start their companies. Sometimes they work for certain companies also. And this investment banking concept is very popular in US and even in Europe. India, we are still thinking कि ये जो चार्ज लेते हैं ज़्यादा है, they charge amount in profit, percentage share लेते हैं. But this is a brilliant career option for most of you who want to make it big. You can get even an international job if you are an expert at that. Other job profiles can range from working with a big trader or a stockbroker, or some AMCs who do equity research. Stockbrokers are generally professional traders. I guess you know about them. And asset management companies are those who sell mutual funds, the AMCs typically, and the numbers have grown up typically in the last few years. And new companies like Quant, PGIM, they are making huge returns actually. Big players like SDFC mutual fund have no answers to them. Kotak is a fantastic mutual fund company. So these companies need a lot of people. And your MBA degree, probably in finance, sometimes a law degree if you have, this is an add-on. This can actually help you out, get an investment banker job in market as well as in international market. Plus, if you want to start, if you want to work for a startup also, you can make it big there. Investment banker is the first career opportunity we can think as a financial planning professional you can have. Second one is portfolio management. Portfolio management, as few people have already talked about, the diversification का बात हम करें कुछ में आते हैं. This is a fusion that इसमें साइंस से लेके कॉमर्स दोनों मिल जाते हैं, और आपको बिजनेस का भी नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स का भी और एनालिटिक्स का भी. As a portfolio manager, you cannot buy a stock or sell a stock depending on your own intuition or anything. You have to look at the overall mix of your clients. आप जिनका पोर्टफोलियो हैंडल करो कैसा है. मैंने जैसे एएमसी में बिग पोर्टफोलियो मैनेजर्स रहते हैं, छोटे छोटे कंपनीज रहते हैं जिनका भी रहते हैं कि ये आपने एक बुक बना लिया, अपने कस्टमर का पैसा बना रहे हो, तो आपका एक कस्टमर कम रिस्क है, ज्यादा रिस्क है, तो आपको एक ऐसा डिसीजन लेना जो सबको सूट करेगा. तो आपका क्लाइंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, बहुत सारे ट्रस्ट का पैसा भी आता है. 1 second फ्रेंड्स. तो आपका क्लाइंट दोनों तरीके का हो सकता है. एंड द टिपिकल institutions with give big money you have seen in the web series of Harshad Mehta, and you know how you can actually make it big or you may lose it. This job also would be a great job to guide you towards organizational policies on investment and decisions regarding asset allocation, which is basically equity में कितना, debt पे कितना, gold पे कितना, real estate पे कितना. It is also crucial in portfolio management that employed professionals work to maximize profits of their clients and at a very nominal risk. जब हमसे आप एडवाइस लोगे ना, आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा, रिटर्न कम होगा. जो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर है वो आपका रिस्क बहुत कम करके अच्छा खासा रिटर्न देंगे, बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस. और शॉर्ट एनालिसिस आप करते होंगे ना एमबीए करने से पहले, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी ट्रेड वो करते हैं, इंडियन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, ग्रोथ, सेफ्टी, न्यूज, डेट का क्या है, इक्विटी का क्या है, पूरा रिसर्च करके रखते हैं. इसके लिए आपको बैकग्राउंड में थोड़ा इकोनॉमिक्स का नॉलेज आना चाहिए. एमबीए तो है ही है, अकाउंटिंग का नॉलेज रहा तो दिस कैन मेक यू एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर जॉब्स. And probably if you are good at math and stats, you are bang on. You can make it really big in this industry of portfolio management. There are professionals who have these degrees and they have gone on to do well. One of the names that comes to my mind is the Parag Parekh Fund is there. I have forgotten the name of, I think Mr. Thakkar is there. Probably he joined as an analyst. Now he is the fund manager of the company, and that fund is doing wonders. They have a fund, they have to international exposure करते हैं, and Indian fund है, Indian taxation system में
70% पैसा इंडिया में, 30% बाहर लगाते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं वो लोग. एंड दे वर ऑल स्टूडेंट्स व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कंपनी एंड दे हैव गॉन ऑन टू मेक इट बिग. सो and obviously as a portfolio manager, if you have to sell all these things, you need to have fantastic communication skills. नहीं तो अच्छे खासे क्लाइंट को आपका आइडिया समझ में नहीं आएगा और वो आपको छोड़ के भाग जाए. तो पहला चीज हमने जो डिस्कशन किया ऑन दिस कैरियर्स वाज, कौन बता सकता है पहला चीज हमने क्या बोला, जो 2 कैरियर का हमने बोला? एनीवन? राहुल जी, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड? इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है. दूसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं. तो और चीजें इस जॉब में आते हैं जिसमें अगेन आई एम नॉट एन प्रो बट आई नो लिटिल बिट, जो है रिस्क मैनेजमेंट. Risk management professionals are actually more competent at identifying market risk and recognizing poor investment outcome. वो आपको रिटर्न देने से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपका रिस्क कम कराने में. There obviously every fund manager's duty, every guy's duty is to maximize return, but इनका मेन स्ट्रेटजी रहता है to minimize risk. They use a lot of mathematical strategy, analytical skill, reasoning skill and news उनका सोर्स पकड़ा रहता है टू मेक इट. और इसमें बहुत सारे मैंने इंटरनल प्रोफाइल्स भी आ जाते हैं. फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर से एंटरप्राइज रिस्क मैनेजर्स आते हैं, सप्लाई चेन रिस्क मैनेजर्स, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजर, डिजिटल रिस्क मैनेजर, टू नेम ए फ्यू. दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल्स दैट आर अवेलेबल. अब कौन से कंपनी जिनको जनरली हायर करते हैं? यू कैन हैव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइक HDFC Life, ICICI Prudential, SBI Life, Bajaj, to name a few, LIC. And then there are Policy Bajaj, the aggregators, the online aggregators. They have a lot of people. They look for such kind of people. They need analysts, manager, consultants, and advisor who can do this. So your PGDM degree, probably MBA, probably a course in risk management can actually do wonders to it. And additionally, apart from MBA, if you can actually want a course, there is something called RMAI, Risk Management Association of India. You can have a certification course from them and it can give you years. Last thing, this is definitely not the last thing as per my source knowledge, there would be many more opportunities apart from this. This is the financial planning. You can see a lot of US channels, YouTubes which say I am a certified financial planner or I am not a certified financial planner. So financial planning karte hain, they are known as financial planners and there are certificated programs for them. And we should always trust a certified financial planner because they are professionals. They are the doctors with MBBS degree. They are not your neighbors who advise you, पेट खराब हो गया नींबू ले लेकर के. So financial planning पे आते हैं तो we have individuals and companies who require the services of you. अगर आप financial planner तो आपका service क्या होगा to secure their current and future financial stability. This career of financial planning probably would help you check their statements, cash flow से लेके the methods in which they are saving, because most of the companies they do more in a secured investment pattern, debt में या FD में लगा के रखते हैं कि सही है कि गलत है, वो चीजें आपको करना है. उनका टैक्सेशन का आपको देखना है, एस्टेट प्लानिंग कैसे करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ऑल दिस थिंग. अभी टैक्स के लिए उनको खाली ये से सफिशिएंट है कि ये से सब NPS करना चाहिए, दैट इज पेंशन स्कीम करना चाहिए नहीं. तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग दैट. इसमें अपॉर्चुनिटी में जॉब कौन कौन देते हैं? लॉट ऑफ KPOs, the knowledge processing organizations. Most of our NBFCs, they are the non-banking financial corporations. The mutual fund companies known as AMCs or asset management companies. Financial journalism, that is actually a budding space. आजकल बहुत लोग उसमें they are making wonders. And you can be self-employed, like few of my friends. You can sell your own product. Even the big and small wealth management companies and many banks have their own wealth management firms as well. You go to ICICI, they have ICICI Bank as well as ICICI Wealth, typically good clients. So your postgraduate degree in MBA, maybe MBA Finance or an MS or even an MA Economics, probably will land you as a financial planner. But it is always advisable to do some courses professionally to be called as a financial planner certified by the recognized institutes. Since I am not a planner, I do not know the exact list of courses, but I have it in my WhatsApp. I can forward it on a later stage. These are the 4 typical career opportunities. Most of the jobs actually collide. They have something to do with one another, and there will be intersections. A person who is doing portfolio management can also do a part of risk mitigation for the organization, and vice versa. That is on the typical 4 important career opportunities.
And you can always be a self-employed without doing any job also. If you have a good base, you बोला इंडिया में 90% ज्यादा लोग अभी इंश्योर्ड नहीं है, उनको इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए. There are many people who don't know what is health insurance, what is the advantages of that, differences क्या है, रूम रेंट क्या कैसे इम्पैक्ट करता है आपके ओवरऑल सेल्स को, आप वो उनको बता सकते हो. म्यूचुअल फंड में लोग अगर एक ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं तो टिपिकली पे 1% एक्स्ट्रा ब्रोकरेज जो ऑनलाइन खरीदते बचा सकते हैं. आप उनको ये एडवाइस देकर आप 0.5% अपना बिजनेस कमा सकते हो. Life insurance commissions are varying from 20%, 30% to up to 50% in certain products. We can sell them by having our own companies also. We can be a DSA, we can take license from certain companies. We need to have some obviously exams cleared, SEBI के कुछ exams है, ISM के कुछ exams है, and we can typically start our own business model also. And how much they earn, probably sky is the limit, but keeping limit aside, I have accounts of few of the people who sell financial products and the balances are in crores and they're all in their early 30s or late 20s. So this industry has a lot of future and many people are going to enter. Even typically smart people can start their own brokerage firm और एक ब्लॉग पेज स्टार्ट कर सकते हो आप जहाँ पे आप लिख सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो. देखो आपने 4 चीजें पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपने यूट्यूब में बताया, सब्सक्राइबर बने तो आपकी फैन बेस और बढ़ेगी. आई हैव सीन सम यूट्यूब एंकर्स बिकमिंग न्यूज एंकर्स एट जी न्यूज, जिनको हम यूट्यूब में देखते थे, फॉलो करते थे. तो लिमिट कहीं कुछ नहीं है, यू डू वेल, पीपल रिकॉग्नाइज यू, योर आइडियाज गो ऑन डूइंग वेल, तो कोई लिमिट नहीं है. जैसे आपके वैसे बहुत लोगों को कैंडल्स पता है, पैटर्न्स पता है, किसी भाई ने बोला एनएसडीएल के बारे में तो हमको ही पता नहीं है वो चीज डिस्पाइट इन्वेस्टिंग इन मार्केट. तो कुछ चीजें हैं जो सबको पता नहीं होता, आपको ज्यादा पता है तो आप उसको एडवर्टाइज करो एंड आप उसका रिटर्न दो. डोंट सेल एनीथिंग फॉर फ्री. आपका ब्लॉग फ्री में हो सकता है, बस उससे एडवर्टाइजमेंट से आपको पैसा कमा सकते हो, बट ट्राई टू मेक एनीथिंग दैट वर्क फॉर यू, इससे प्रॉफिटेबल बने. आपके जॉब के साथ भी आप ये कर सकते हो इफ योर कंपनी अलाउज इट. Typically if you are in an institution where you sell these products, like I work for a bank where we sell life insurance, we sell health insurance and everything, so I cannot start a blog or I cannot make a YouTube channel because it goes against the ethics of the bank, ethics of the organization where I work for. But someone working in IT can also sell mutual funds. There is, I think, no restriction on that. I don't know exactly. I don't work there. So depending on your company's clause, you can do 2-3 multitasking things. There are many people who refer. आप अगर रेफर करके बोनस कमा सकते हो किसी में, तो इसमें भी क्यों नहीं कमा सकते. सो आपको बस अपने कंपनी के क्लॉज देख लेना है. तो जॉब के साथ ये कर सकते हो, जॉब के बिना ये कर सकते हो, और इसी तरह का जॉब भी कर सकते हो. ये तीनों चीज थे कैरियर ऑप्शन में इसके ऊपर मेरी तरफ से. एंड आई मे हैव रेड सर्टेन पार्ट्स, इसलिए मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ा बिकॉज आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी. ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा सा नया था. सो माई अपोलॉजीज फॉर दैट, सिंसियर अपोलॉजीज. कुछ भी इसमें डाउट है तो पूछिए, मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा उसको क्लियर करने में. नहीं कर पाए तो वी कैन मैंने अगेन कनेक्ट लेटर ऑन एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन व्हिच फिट्स अ रिक्वायरमेंट. सो माई पार्ट टिपिकली इज ओवर. मैंने सिर्फ लास्ट में थैंक यू बोलूंगा, बट जो भी क्वेश्चन उससे पहले आएगा आई एम अवेलेबल टू आंसर दैट. Student, the platform is now open for questions. You can raise your hand and ask a question. Yes, there is a hand raise from Priya. Priya, you can unmute yourself and ask your question. Good morning, sir. Hi, ma'am. बोलिए प्रिया. Yes, sir. Good morning, sir. I have a question. If I want to pursue my career in investment banking, what is a roadmap? Like presently, I'm doing PGDM. So, what I have to build up in my skills and knowledge so that I can be a good investment banker. Ma'am, what is your background? What have you studied before MBA? Were you into commerce, science, arts, engineering? What was the trade? Sorry, sir, you are not audible. Can you please repeat? I was asking what was the last course before PGDM? You studied in science, commerce, engineering, arts, or what was the? Sir, I am a commerce student. I did my BBA in finance, and now I am pursuing PGDM. Then probably most of the important prerequisites are already covered, and probably you can go for a couple of exams from NSDL. I cannot figure them out exactly right now, but I can definitely share the link to Shruti ma'am later on, and she can share it too, which can add to your CV. Because when not portfolio, when the investment banking companies, I don't know whether they're visiting campuses for recruitment, they look at certain additional courses because those courses make you understand the market in a better way. So the link of the important courses, the exams that should be cleared before probably
we can land up in a job like that, will be shared to Shruti ma'am, who can subsequently share it with you. And about the roadmap, probably an investment banker itself is such a big profile. People grow on to become handling a smaller portfolio to a bigger portfolio in that. So someone may start with a 100 crore portfolio handling and they go on to become 10,000 crore kind of portfolio. That is the growth in itself. People don't change the job because it's a high commission paying job. We make money for the people and we earn out of the return. The investment bankers generally get good chunk of money from the return of the customers. They have a variable part of their income there. So that way they make it big. And as far as I know, investment bankers are still called investment bankers, but they handle bigger portfolios. The name does not change. And they may go on to start their own company if their portfolio size is really big and they have a good command and control over the clients. That's as far as my understanding of this concept is concerned. It may not be 100%. It is my immense pleasure to present the vote of thanks. I, Alisha Lalani, on behalf of Deccan Education Society IMDR, would like to thank you, sir, for giving us time and inspiring us on personal finance career prospects. Sir, your thoughts, experiences, and stories have really inspired us. You mentioned in your talk about financial planning and budgeting and how it has two basic things, assets and liabilities, and how we manage. You also told us the importance of emergency funds. Later, you told us about term plan and how it should be 20 times your monthly salary and how important it is to get ourselves adequately covered, which would compensate for our income. You also told us about health insurance and gave us an example that as screen guard is important for our phone, health insurance is important for our life. You also told us about investment, in that you told us about equity, mutual funds, and debt. You also mentioned that we should always start investing with appropriate goals and always keep a check on our investment. Later, you mentioned that we should always have a mentor. We may always know a lot, but we need more guidance. This piece of information is really helpful for us in our future endeavor. Thank you so much, sir. I would also like to thank our director, faculties, non-teaching staff for continuously encouraging and supporting us for such corporate connect. I thank the entire student organizing team, technical support, and last but not the least, I thank all my student colleagues without whom this session wouldn't have been possible. Thank you so much.